Let's start with chapter number 7 in C sharp. So in chapter number 7, we are going to learn array collections and string manipulation. So initially Mhm, we will start with arrays. mhm, As we know very well, an array is a sequential collection of element of similar data type. Means we can have a similar data type values into the array, right? In C sharp, an array is an object and thus a reference type. So basically, array is a class in C sharp, and that's why it is a reference type. And therefore, they are stored on the heap. So uh, as we know, value type are stored on the stack, and uh, reference types are stored in the heap in the memory, right? Okay, so there are different types of arrays in C sharp. So previously, we have seen like a single dimensional array. So in chapter number 2, you would have seen single dimensional array examples, right? So other type is like multi-dimensional array, and in multi-dimensional array there are like some other types, like two types, like rectangular array and jagged array. Okay, so a multi-dimensional array is an array of arrays. So multi-dimensional array is the one in which each element of an array is an array itself. It is similar to tables in the database where each primary elements row in collection of secondary elements columns. So we have worked on data table. So in data table we store data in like rows and column. So in same way we can create a multi-dimensional array. So we can like store data in row and column manner. If the secondary element do not contain a collection of other elements, it is called a 2D array. The most common type of multidimensional array. Otherwise, it is called a n-dimensional array, where n is the depth of the chain of array. So we can have a, like n-dimensional arrays in C sharp, but mostly we use like 2D array only. So I will show you the example. So in multidimensional, there are two types, like rectangular array, in which each row contains an equal number of columns. So yeah, like what I would say, like 2 by 3 array. So the like 2 by 3 means what? Two is row and three is column. So there will be a two rows and three columns into that array. Okay. oh, So okay, here you can see the like diagram where they have showed like single dimensional array. In single dimensional array, there is only single chain, and it has a like index. So we can have a like what would I say, data in the single chain only. So the second like type is like two-dimensional array. So we also call it rectangular array. So in rectangular array, we can define like rows and columns. So here they have mentioned like 4 by 4. So in that case, we will have like four rows and four columns. Okay. This is jagged array. I will show you means how we can define it and how it is different from the multi-dimensional array. Okay, so the next is like three-dimensional array. So now it is like what would I say, if uh, array dimension count goes beyond the like 2D, so then we should call it like n-dimensional array, because we can have like three-dimensional, four-dimensional, five-dimensional number of dimensional array we can define it. Okay, like what would I say, like 3 by 2 by 3. So this way we can define it, but it is means so complex to manage the array data. So it is not a best practice using like multi-dimensional, means n-dimensional array. So mostly when means real time we use single or 2D array only. Okay, so let's flip to Visual Studio. We will see this all in action.
Okay, I'm taking one console application. Okay, let's see how we can define an array. So I am defining one integer array. Integer arr equal to new int. So this is the syntax of defining an array. Okay. So this is the size of an array. So it is mean that this array will contain 5 uh, elements. Okay. So the another ways of like defining an array is we can directly initialize the array 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So in the below syntax, what we have done, we have defined an array variable and directly we have initialized it. Means it is having these values available in the array. So let's run this and see. ठीक है, यहाँ पे अभी जो object create हुआ है, so it can contain 5 values, but we have not added values into that, right? But in below case, what we have done, we have defined an array and we have added values too. So if you see the like ये array का अगर आप देखोगे index यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये index है, right? और जो right side में दिख रहा है 0 0 0, these are the values, but by default uh, uh, it has taken zero value because it is an integer array, right? An integer has a zero by default value. But in below case, what we have done, we have declared the array and same time we have passed value. That's why it is showing that values here, right? So these are the different way means we can define an array. Okay, and this is the example of single dimensional array. Okay, so let's see how we can add values into the array. So here we have defined an array. So now we will add values. So simply arr of I, we have to mention the index. Okay, so arr of I means arr of index. So I am starting with 0. Arr of I equal to 10. So this is how we can add values. Then there are 5 elements. There can be a 5 elements in the this array, right? So index will start with from 0. So 0 1 2 3 4. So we will have an index from 0 to 4, right? So I'm adding values into the index 2 20 and then index 4 50. Let's run this and see. 0 to 4. No, I have added only values to some specific indexes. 0, 2, and 4 only. Yeah. Yes. See here, I have added a value for 0 index, then 2 and 4 only. So rest of are showing default value, right? So this way we can add values into the array. So let's see how to define multidimensional array. So to define multidimensional array, this is the syntax. Like we have to use comma to separate the dimension. Okay. So I'm defining like 2 by 3. Okay. So this is how we can define an array. Okay. Now मल्टीडायमेंशनल एरे अगर हम लोगों ने डिफाइन किया है तो इसका इंडेक्स मतलब किस तरह से डिफाइन होगा. एज आई सेड फर्स्ट value is our row, right, and second value is our column. So it is mean that this array is going to store 2 rows and 3 columns. So the index will be like
अब यहाँ पे इंडेक्स मतलब किस तरह से जनरेट होगा इसका, जैसे 2 रोज है राइट एंड 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे डिजाइन में दिया हुआ है उन्होंने। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे मान लो ये अभी 2/3 का मेरा एरे है, तो ये इतना ही रहेगा 2/3, मतलब ये 23 से तो लेकर तो यहाँ तक राइट, इतना। यहाँ पे यहाँ पे जीरो इंडेक्स और यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स राइट। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मतलब जीरो इंडेक्स राइट। हाँ और और उसके बाद में फर्स्ट कॉलम मतलब वो जीरो इंडेक्स, मतलब जीरो ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट वैल्यू राइट। हाँ। तो यहाँ पे अगर 0,0 इक्वल टू 50, ठीक है। उसके बाद 1,0 किया मतलब क्या होगा कि मतलब ये है फर्स्ट रो, जीरो मतलब फर्स्ट रो राइट। फर्स्ट मतलब ये सेकंड रो है राइट। हाँ 0,0 मतलब फर्स्ट कॉलम। उसके बाद 0,1 मतलब सेकंड कॉलम राइट। मतलब सॉरी, ये इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड सेकंड कॉलम। कॉलम। हम्म। और ये हुआ थर्ड कॉलम, सेकंड रो। और सिमिलर यहाँ पे 1 1 एंड 1। So this is how index is generated for multi-dimensional array. 300, 400 and 500। इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह से ये दिखेंगे राइट। यहाँ पे पहले आप देखो इंडेक्स किस तरह से जनरेट होता है इसका। तो यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स बनता है, जीरो ऑफ जीरो मतलब जीरो, ठीक है। जीरो ऑफ वन, जीरो ऑफ टू, वन ऑफ जीरो, वन ऑफ वन, वन ऑफ टू। ओके, मतलब यहाँ पे दो रोज, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है राइट। वन से स्टार्ट हो रहा है और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट रो है। अभी अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ जीरो ऑफ जीरो, मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई। उसके बाद मैंने अगर वन ऑफ जीरो किया तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप करता हूँ प्रोग्राम को। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जंप, सेट एज नेक्स्ट स्टेटमेंट करके। तो ये बीच में के दो जो मतलब कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं हुए अभी, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट ऐड की वैल्यू किसमें, वन ऑफ जीरो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में राइट। सो दिस इज हाउ मल्टी डायमेंशनल एरे वर्क्स, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग किस तरह से मतलब वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एरे से राइट। मींस हाउ वी कैन प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम एरे। तो हम लोग सिंपल फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन आई इज लेस देन arr डॉट लेंथ देन आई प्लस प्लस। सो लेंथ एक एरे की प्रॉपर्टी है, तो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे राइट। यहाँ पे इसका ऊपर इंटीजर वाला रिटर्न कर रहा टाइप है, है मतलब क्या? वो रिटर्न लेंथ रिटर्न करता है, वो एरे में जितने भी वैल्यूज है उसका काउंट रिटर्न करता है। ना मल्टी यार ऊपर वाला कर रहा है क्या प्रिंट? हाँ ऊपर वाला कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एरर ऑफ आई। इस तरह से आप एरे की हाँ। वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट किए थे ना, जस्ट नहीं पुट इट हियर, नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे लेंथ में उसने इसकी लेंथ रिटर्न की राइट।
तो इसकी लेंथ 5 है, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स, इसलिए 1 2 3 4 5, इसलिए वो लेंथ 5 रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, इंडेक्स, बट इंडेक्स स्टार्ट विद 0, सो एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की लेस देन, तो मतलब वो फिफ्थ को काउंट नहीं करेंगे, इट विल काउंट लाइक 4, 0 to 4, राइट। ओके, सो यहाँ पे वो 1 by 1 ये वैल्यूज उसको, मतलब इंडेक्स वाइज उसको एक एक वैल्यू मिलेगा और वो प्रिंट करेंगे उसको, राइट। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। आप फॉर ईच भी यूज कर सकते हो, मैं फॉर ईच का सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको। फॉर ईच इंटीजर वैल इन ARR, तो फॉर ईच का जो बेसिक सिंटेक्स है, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन ये कीवर्ड है इन, ठीक है, और उसके बाद उसको कलेक्शन पास करना है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरे ये एज अ कलेक्शन उसको पास किया है, राइट। और ये एरे का जो वैल्यू है वो कौन से डेटा टाइप में, तो वो इंटीजर में, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड इंटीजर वेरिएबल हियर, और ये एक वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन देन वैल। ओके, इतना ही है सिंटैक्स, है, समझ में आया ना। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है हमें। और अगर ये 2D एरे पे अगर हमें वो यूज करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी इट। फॉर ईच, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू टेक द कलेक्शन ऑफ रोज इनटू द टेबल, ठीक है। देन उस रो में से हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हर रो में से। सो इंटीजर एक एरे डिफाइन करेंगे, रो इन मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट, इस तरह से। फॉर ईच इनटू इंटीजर, ओके ओके। ओके ओके, ये जगह एरे के लिए यूज किया था मैंने, ठीक है। ओके, सो तो अगर मतलब 2D एरे अगर हमें इटरेट करना है, तो सिंपली वी हैव टू यूज द सेम सिंटैक्स व्हिच वी हैव यूज्ड फॉर सिंगल डायमेंशनल एरे। वो बेसिकली क्या करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम like first row first column, then it will iterate all first rows column, then it will come to the second row and it will iterate the second rows column. So this way it will work. So let's see in action. यहाँ पे आप देखो, जैसे अभी मैं यहाँ पे ये इसको पिन कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ, it is not initialized test, that's why it was not getting pin. ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने इसको पिन कर दिया, तो आप यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू चेंज होगी कंटिन्यूअसली। So it is basically iterating the values from the each row and from each column. Okay. So it is printed over there. Okay. तो ये समझ में आ गया ना। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, सो अभी सो द नेक्स्ट पॉइंट इज जैगर्ड एरे।
So a jagged array is one in which the length of each row is not the same. मतलब ये array में कैसा है, हर रो में हर रो की जो लेंथ है वो सेम नहीं होंगी. मतलब फॉर एग्जांपल एक रो में जैसे 4 कॉलम हो सकते हैं, कोई और दूसरे रो में 5 कॉलम हो सकते हैं. मींस कॉलम लेंथ इज नॉट फिक्स्ड इन ईच रो, राइट. हमने जो अभी 2D एरे देखा जिसमें रो एंड कॉलम मतलब उनका जो लेंथ है वो फिक्स है. जैसे 3 रो है, 4 कॉलम है, जो भी है 3/4, और 2/3 है, जैसे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. बट इन केस ऑफ jagged array we will have a variable length for कॉलम्स. मतलब जैसे फर्स्ट रो में मेरा 2 कॉलम है, दूसरे रो में 3 है, तीसरे रो में 4 है, दिस काइंड ऑफ, राइट. तो यहाँ पे वही उन्होंने एक एग्जांपल दिया है हाउ वी कैन डिफाइन jagged array. यहाँ पे जैसे इंटीजर माई टेबल इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे 3 डिफाइन किया. मतलब देयर आर 3 रोज इनटू दैट कॉलम, बट the so into that array, but the columns are defined at run time, right. मतलब यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, कॉलम्स को बाद में डिफाइन किया है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल. मैं एक यहाँ पे मिनट टॉप में ले लेता हूँ. एक मिनट. Okay, to say the syntax is to define a jagged array is like integer, then square bracket, then array name means object name equal to new, and integer and size of the row. So it is must to define the size of the row, but it is not mandatory to define the columns, right? Because this can be variable in the jagged array. So let's add values into the jagged array. So in first row, I am going to add like 2 values here. They have added 3, but we will add 2 only, right? So jagged array of 0 and columns of 0 equal to 1. Okay. Then columns of 1 equal to 2. Okay. Let's I will say here first column. Let's copy paste this. So this is our second column. So I am adding one more column here into the second column, 2. Then ठीक है, तभी ये जो थर्ड रो है इसके अंदर मैं 4 कॉलम ले लेता हूँ. ठीक है, 0 1 2 3. इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, मतलब ये किस तरह से जनरेट करेगा रिकॉर्ड्स. हाँ, एरे जनरेट करेगा किस तरह से. ठीक है, यहाँ पे एक एरे डिफाइन हो गया. दिस इज अवर जगड एरे, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड नंबर ऑफ रोज. तो यहाँ पे 0 1 2, राइट. दीज आर 3 रोज अवेलेबल इन दिस एरे, राइट. बट यहाँ पे जो कॉलम्स यहाँ पे नल दिखा रहा है, इट इज मीन दैट नल, मतलब सी शार्प में नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द नल टाइप, राइट. So basically what we are trying to do here, we are adding array of object here in each column. So that object can have a like number of columns, right. Any object can have like 2 columns, 3 columns, or anyone have a 4 columns, right. So that's why the jagged array is having variable column length. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, बेटा. रिज्यूम रिकॉर्डिंग. यहाँ पे बेसिकली क्या करना है हमें, वी हैव टू create an object and then we have to add values into that object. So what we will have to do, like my array name and then its column length, okay, and then its object. Zero equal to new int 3.
मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, int 2. ओके, सो नाउ इट इज मीन दैट जो मेरा फर्स्ट रो है उसके अंदर क्या होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, राइट. देन अगेन सेम वी विल डू फॉर second row and third row. So in second row we want 3 columns, and in the third row we want 4 columns. Okay, so this is how we initialize the jagged array. ठीक है, let's run this again. The index was outside the bounds of an array. Okay, okay, but 0 1 and 2, right? Because we have a like 3 rows here, so index will start with like 0, then we will have a like 0 1 and 2 rows here, right? ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया. अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो वी कैन सी दैट वी हैव अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर एरे इन ईच रो. सो इन फर्स्ट रो वी हैव अ 2 columns or 2 values into the first row, right? In 3, in second row we have a 3 values, and in third we have 4 values. तो यहाँ पे मैं सेम वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, राइट. तो अभी अगर आप देखोगे तो यू विल सी दैट वी हैव एडेड 2 values into the first collection, into the first row, right? Then in second collection we have to add values 8. ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स गलत हो गया अपना. यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, राइट ना. 1 and 1, then 2 2 2 and 2. ओके, तो इस तरह से जगड़ एरे मतलब इनिशियलाइज होता है. यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 कॉलम आ गए, सेकंड रो में 3 और थर्ड रो में 4 कॉलम है, राइट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिंट दिस. अभी यहाँ पे कैसा है, मतलब हमें रोज और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमें पता नहीं है, राइट. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन. मतलब अभी यहाँ पे जो फाइनल लेंथ है वो कॉलम का क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी है गेट लेंथ, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. या फिर यहाँ पे जो एक सिंपल सिंटेक्स दिया है जैसे फॉर ईच, और हम लोग क्या करेंगे, हर रो का कलेक्शन लेंगे, बिकॉज हर रो में जो एरे नंबर ऑफ वैल्यूज है तो वो एक एरे का कलेक्शन है, राइट. इट इज एन इट इज एन एरे, राइट. तो ये सिंटेक्स भी हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर एरे रो इन व्हाट माय जगड़ एरे. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होगा, हर बार हमें एक एरे मिलेंगे और फिर वो एरे में से हमें क्या करना है, वैल्यूज लेनी है. तो ये सेम सिंटेक्स मैं इसके अंदर डालता हूँ. मतलब हमें नेस्टेड फॉर ईच यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे बस ये रो आएंगे, राइट. और यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे सिंगल वैल्यू होंगी हर वैल्यू इसमें, हर इटरेशन में. तो यहाँ पे वैल, देन कंसोल डॉट राइट लाइन. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ राइट करते हैं हम लोग, ठीक है. राइट, देन वैल प्लस थोड़ा स्पेस देंगे इसके बीच में, ठीक है. इस तरह से करते हैं, प्लस वैल देन स्ट्रिंग. और क्या करेंगे, हर रो के बाद, मतलब एक रो खत्म हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रिंट 1 लाइन, ठीक है. इस तरह से ये कोड किया हुआ है, ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से वर्क होता है. यहाँ पे एरे जनरेट हो गया अपना, राइट. अभी वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये किस तरह से वर्क होता है. अभी यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे
एरे ऑफ एरे कलेक्शन दिया है जैगड एरे का, राइट। इसके अंदर भी एरेज है हर हर रो के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वन बाय वन उसको हर इटरेशन में एक रो मिलेगी। अभी फर्स्ट रो में के इसको एक एक एरे मिल गया जिसमें 0 नंबर पे 1 है और 1 नंबर पे 2 वैल्यू है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे उसको प्रिंट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये दो वैल्यूज उसने प्रिंट किया, उसके बाद वो एक लाइन प्रिंट करेंगे, राइट। अगेन इट विल गो टू द आउटर एरे, राइट, आउटर फॉर ईच। फिर इसको यहाँ पे अभी क्या होगा, सेकंड इटरेशन में इट विल फाइंड द कलेक्शन ऑफ सेकंड रो एरेज, राइट। अब इसको जो सेकंड रो में जो कलेक्शन है वो मिला, तो उसमें 3 वैल्यूज है, राइट, ये 0 1 2। तो उसके बाद वो उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आया 1 2 1 2 2 1 2 2 2, राइट। इस तरह से ये प्रिंट हुआ। हमने स्टार्टिंग में लिया था तो इसलिए यहाँ पे वो प्रिंट हुआ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब कोई भी डेटा टाइप का एरे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग का। यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया है, आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या करो, इस तरह से आप एरे डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग एरे, राइट। So it can contain number of string values into an array, right? For each loop हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे कुछ दिया है, थोड़ा इनबिल्ट वो किस तरह से वर्क होता है ये सब चीजें, but we don't have to go that much of deeper into that. We have to just means understand the syntax and we have to just use the syntax. Okay. ठीक है, एरे में इतना ही था और कुछ नहीं है एरे में। ओके, यहाँ पे बस और एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग राइट लाइन गेट लेंथ, मतलब ये एक मेथड है गेट लेंथ। इसका यहाँ पे जो पैरामीटर वो है डायमेंशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे गेट लेंथ 0 कर दिया और मैं यहाँ पे गेट लेंथ 1 करता हूँ, तो ये बेसिकली मतलब रो और कॉलम की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो मेथड है इट रिटर्न्स द कॉलम्स एंड रोज लेंथ। जैसे अपना जो ऊपर जो था कौन सा था, ये वाला जो था अपना 2D एरे था, राइट। कहाँ पे डिफाइन किया था 2D एरे, ये वाला। तो यहाँ पे जो रो की लेंथ है वो 2 है और कॉलम्स की लेंथ है 3। तो ये एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो मतलब कॉलम्स है जैगड एरे में, उसका मतलब वो एक कलेक्शन है, तो इसलिए वो इट इज नॉट एबल टू रिटर्न द लेंथ ऑफ दैट कलेक्शन। ओके, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ। और लास्ट में क्या किया है, मतलब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे का हमने गेट लेंथ ऑफ 0, मतलब 0 डायमेंशनल मतलब क्या, रोज। गेट लेंथ ऑफ 1 मतलब क्या, 1 डायमेंशनल मतलब कॉलम्स। तो यहाँ पे ये कॉलम का लेंथ रिटर्न करो और यहाँ पे कॉलम का लेंथ रिटर्न करेगा और यहाँ पे वो रो का लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, यहाँ पे जैगड एरे का प्रिंट किया था, राइट। लेंथ वो यहाँ पे प्रिंट हो गया और नीचे हमने क्या किया, मल्टी डायमेंशनल एरे का 2 by 3 उसने वो लेंथ रिटर्न किया, ठीक है। तो एरेज में इतना ही था।